our growth is not in her. Hello students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Students, today we will discuss in-text question of chapter 1 chemical reactions and equations. So let's start now. Here page number 6, first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Okay, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्लीन करना चाहिए बिफोर बर्निंग इन एयर. नाउ सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा. व्हेन इट एक्सपोज टू एयर it react with oxygen to form a layer magnesium oxide MgO, magnesium oxide, on its surface. The chemical reaction of this can be written as magnesium when react with oxygen, then it will form MgO, that is called magnesium oxide. Okay, now this layer of magnesium oxide is quite stable. ये क्या होती है, जो MgO बनता है ये क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है एंड प्रिवेंट करता है फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम. क्यों, जब इसकी कोटिंग लग जाएगी तो उसके बाद अगेन मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर पाएगी विद ऑक्सीजन. ओके, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर. तो इस लेयर को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को किससे साफ किया जाता है, सैंड पेपर होता है. ठीक है, उसको इस पे रब किया जाता है फॉर टू रिमूव दिस लेयर सो डैट द अंडरलाइंग मैटर, अंडरलाइंग मीन्स फंडामेंटल, ओके, metal can be used for the reaction. Okay, you have to remember this chemical reaction of magnesium with oxygen. It gives magnesium oxide. Second question is, write the balance equation for the following chemical reactions. First is hydrogen react with chlorine gives to hydrogen chloride. Barium, second reaction is barium chloride react with aluminum sulfate give rise to barium sulfate plus aluminum chloride. Okay, third one reaction is sodium plus water give rise to sodium hydroxide plus hydrogen. These reactions are given in word form. So we will write these chemical equation in symbolic form. Okay, solution for question number 2. Here first one reaction is between hydrogen plus chlorine. So hydrogen, here hydrogen is a gas, it can be written as H2 plus chlorine Cl2 give rise to 2HCl, hydrochloric acid. Okay, now second is reaction between sodium plus water. So symbol of sodium Na plus water H2O, then it will form sodium hydroxide, that will be NaOH plus hydrogen H2. Now we have to balance this. Okay, here hydrogen is H2 and here H, it means total is 3. So here if we will put coefficient 2, then here comes 2. Okay, and here nitrogen in case of product is 2 atom, so we have to put 2 coefficient here. Now it is balanced. Now third one reaction between barium chloride plus aluminum sulfate, barium chloride BaCl2 react with aluminum sulfate Al2SO4 whole 3.
give rise to BaSO4 plus AlCl3. ओके, अब ये कैसे आया कंपाउंड, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड लगाकर बाय पुटिंग वैलेंसी आपको फाइंड करना है, ठीक है। इनकी इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए 4 3 12, ऑक्सीजन इज 12। फर्स्टली वी विल बैलेंस मेटल, देन नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो फर्स्टली मेटल here is barium, so here barium is 1 okay. Now chlorine is here 3, here 2. So here if 3, if we put here coefficient 3, then 3 2 just 6, total number of chlorine is 6, and in this case here we have to put 2. Okay, 3 2 just 6. Now aluminum atom is changed here, 2 2, no, here in both sides is equal. Okay, and barium, here barium is 3 atom and here 1, so we have to put here 3 coefficient. Okay, now it is balance. Next question number 3, write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. मतलब हमें स्टेट भी देनी है, ठीक है। जो भी, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है, तो वो हमें फिजिकल स्टेट इसकी, वी हैव टू राइट दिस केमिकल इक्वेशन. So in first, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Solution for question number 3. Here first part is the reaction between solution of barium chloride. So solution of barium chloride formula is BaCl2. Its physical state is aqueous, okay, plus react with sodium sulfate, it is salt, so it is aqueous, give rise to barium sulfate, it is solid form, and it will be white PPT plus 2 NaCl. NaCl is aqueous, it is a salt formed, okay. So when barium chloride react with sodium sulfate, give rise to barium sulfate, that will be the white PPT, precipitate होगा ये, plus sodium chloride, okay. Part is sodium hydroxide solution, that is NaOH, in water reacts with hydrochloric acid, that is HCl, in water to produce sodium chloride solution and water, okay. So here NaOH solution for this sodium hydroxide NaOH, okay, it is aqueous, react with HCl, it is aqueous form, give rise to NaCl, okay, plus water H2O, it will be liquid. So when sodium hydroxide react with HCl, it will give sodium chloride plus H2O water, okay. So that reaction is the example of neutralization reaction, because here base NaOH is a base, react with HCl, it is an acid. When bases and acids react, then it will give salt, that will be NaCl here, and water molecule gives, okay. So that was the example of double displacement reaction, and that was the example of neutralization reaction. Now on page number 10, first question is, a solution of a substance X is used for whitewashing. कोई solution है
कोई सब्सटेंस एक्स का जिसका यूज़ किया जा रहा है वाइट वॉशिंग के लिए, देन हेयर फर्स्ट पार्ट इज़ नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हमें वो सब्सटेंस एक्स बताना है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इज़ राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। ओके, हमें पहले ये सब्सटेंस पता करना है और फिर इसकी रिएक्शन लिखनी है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ओके, so the substance which is used for white washing is calcium oxide, that is called quicklime. Okay, so here on answer for first part will be the substance X, it is denoting that one compound, okay, is calcium oxide, also called क्विकलाइम। आपको ये भी पता होना चाहिए इसका अदर नेम क्या बोलते हैं इसको, क्विकलाइम। इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सेकंड इज आस्किंग देयर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बिटवीन दिस सब्सटेंस एक्स, दिस इज a calcium oxide reaction with water molecule. Okay, now solution for second part, calcium oxide, that is a solid. Okay, and here this is given as compound X, substance X, calcium oxide react with water H2O, it is a liquid form, it will give calcium hydroxide. It is a most important reaction, calcium hydroxide whole twice, that will be in solid form. Okay, that is called calcium hydroxide or other name is slagged lime. Okay, एक लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मार्बल कहते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है पहले, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड क्विकलाइम। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू नेम, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम। ओके, so that will be the final answer for this. Now next solution, now next question number 2, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. Okay, now we go to 1.7, activity number 1.7. Okay student, you have to read this complete activity. Okay, electrolysis of water, this activity is based on electrolysis of water, and now I am going to explain this, okay, through chemical reaction. Okay student, in activity 1.7, water is electrolyzed to give H2 hydrogen gas at one electrode, एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस देगा और दूसरे पे O2 गैस, O2 गैस, हाइड्रोजन गैस at the other electrode. Okay, overall there will be this chemical reaction perform. 2H2O liquid when undergo electrolysis
it gives 2H2 hydrogen gas plus it is a gas plus O2 oxygen gas. So hydrogen gas collect at one electrode and O2 gas at other electrode. Okay, thus two molecule of water on electrolysis give two molecule of hydrogen gas and one molecule of oxygen gas. That is here two molecule of hydrogen gas and one molecule of oxygen gas. Okay, or in other word, the amount of हाइड्रोजन, यही तो पूछा गया था उसमें, अमाउंट ऑफ डबल किसकी है, हाइड्रोजन. ठीक है, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड, कौन सी गैस की अमाउंट डबल है, कलेक्टेड वुड बी डबल. तो यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल है, तो इट मीन्स जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कलेक्ट होगी डबल देन that of oxygen gas. Okay, so that will be the solution for this. Now on page number 13, first question is here, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें आयरन नेल डीप की जाती है? Okay, now we will discuss this one. Iron nail acquires a brown coating of copper as a result of the displacement reaction, in which iron has displaced copper from copper sulfate solution. The solution becomes light green. जब रिएक्शन की कराई जाती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की आयरन के साथ, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो चेंज हो जाता है, वो लाइट ग्रीन हो जाता है. क्यों हो जाता है? That will be clear by this chemical equation. When Fe, it is a iron solid, react with copper sulfate SO4, give rise to iron sulfate. It is aqueous plus copper. It is a solid. So this copper deposited on nail. Deposited on nail. ओके, ये लिखा है यहाँ पर, देखिए, आयरन नेल एक्वायर ए ब्राउन कोटिंग. तो ये जो कॉपर होता है, ठीक है, इसकी ब्राउन कोटिंग आयरन नेल पर चढ़ जाती है. और ये क्या है? इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज हेयर आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट. ओके, एंड इट इज़ अ आयरन नेल and gives form iron sulfate solution and displace copper. So student, when iron nail is dipped in copper sulfate solution, the displacement reaction take place. This is a displacement reaction. Okay, ये displacement reaction take place. The color of copper sulfate solution fades due to the formation of light green solution of iron sulfate. ये क्या होता है? हमारा greenish होता है, in color greenish सॉल्यूशन. इसके बनने के कारण कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो फेड हो जाता है. ठीक है,
ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन है. So that is the chemical reaction for solution 1. Second, question number 2. Give an example of a double displacement reaction other than one given in activity 1.10. Activity 1.10 में जो एग्जाम्पल है उसको छोड़कर कोई अदर एग्जाम्पल दे रहा है, वो एग्जाम्पल नहीं देना है. ओके. नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2. Here I will give example of barium chloride BaCl2 when react with copper sulfate, it gives barium sulfate. It is a solid white PPT plus copper chloride. It is aqueous. Okay. So this is the example of double displacement reaction. Now next and last one question of this chapter. Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. First is here sodium react with oxygen gives Na2O, sodium oxide. Second is copper oxide react with hydrogen, it will give copper plus water. Now solution for this. Here first one equation is given between sodium and oxygen. Okay, when sodium reacts with oxygen it gives sodium oxide. So student, here we have to identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in this reaction. And now in this reaction sodium is reacting with oxygen, so we can say so Na2O, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड. क्या हो रहा है इन दिस रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीडेशन. Now in this reaction directly sodium adding with oxygen here, so it will undergo oxidation. Okay, if we talk about the reverse reaction from this, so we can say in this case Na2O, in this that this means that oxygen O2 has been reduced. इससे O2 यहाँ पे क्या हो गई, सेपरेट हो गई. ठीक है, और सोडियम ये है. अगर रिवर्स चलते हैं तो that will undergo reduction, reduce. So finally in this reaction Na, सोडियम इज, ये सोडियम ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रही है, Na2O, ऑक्सीडाइज्ड टू sodium oxide, Na2O. This means that oxygen O2, this oxygen has been reduced, Now next, in this reaction copper oxide reacting with hydrogen gas give rise to copper plus water. So in this reaction copper oxide will undergo reduction because here copper is reducing from copper oxide. Okay, so that will undergo in reduction process. And in this case hydrogen is reacting, adding with oxygen, so that will undergo oxidation. So finally in this reaction copper
oxide has been reduced कॉपर, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हटी, मतलब कॉपर रिड्यूस हो गई और इसने अपना ऑक्सीजन किसको दिया, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ के ये ऑक्सीडेशन के अंदर चली गई, ठीक है। एंड सेकंड H2 हैज़, यहाँ पे H2 क्या हो जाएगी, हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। Okay student, today this one chapter has completed, so study well, and student, don't forget like, share and subscribe this channel. Thank you so much.